Finished, sir. Okay, verified. It's working, right? Sir, in MySQL, all the 1,000 records are exported. Just verify. Okay. Okay. Now you understood, right? How to upload, how to do. Yes, sir. Okay. मेरा भी अभी काम किया सर. So import export clear, right? हाँ. So sir. what is import? Import, you're importing a table from MySQL to HDFS. Okay. Export. You're exporting the record table from HDFS to MySQL database table. Okay. So no doubt, right? Sir, but again, if we practice, we'll get some doubts. And practice तो करोगे नहीं आप लोग. करते तो हैं सर. Sir, we'll do. If you not do, you will forget. Okay. Just make sure that at least 2 times just practice. Okay. जैसे आज एक बार कर लेना, एक वीकेंड में कर लेना, याद रहेगा. In future again, if you want to recall, then you can easily recall. अगर 2 बार practice आप कर लोगी तो. ठीक है? Okay, sir. Sir. As you said, in real-time scenario from HDFS to MySQL, there won't be any export, right? In some scenario, they used to minor amount and all. If they want to give to someone else and all, they can use. But usually, up to you can say that 80% is not used. ठीक है? Okay, sir. Import ही ज़्यादा यूज होती है ना. Let me share my screen. So this all slide we have seen, right? Yes, sir. So till monolithic we have seen. So what is distributed? Any idea? So monolithic means Sir. what? In one single system, each and everything was present, right? सर डिस्ट्रीब्यूटेड ऐसे हुआ जैसे इन ऑफिसेज वी हैव सर्वर्स आर कनेक्टेड विद ऑल आवर कंप्यूटर्स. So, इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड हमारा क्या हो गया, जैसे कि एक कॉमन टास्क है, ठीक है, या कुछ हमारा डेटा है, तो हमारा डेटा मल्टीपल क्लस्टर. फॉर एग्जांपल, इफ यू आर हैविंग 100 MB ऑफ फाइल, ओके, एंड you are having 10 system interconnected. So 10 MB will be stored here, 10 MB will be stored here. So like this, your data will be distributed. Okay. So what will happen? So जैसे कि कुछ आपको काम करना है, कुछ भी, whatever you are doing any operation, anything. So what will happen? So पहले क्या हो रहा था, मोनोलिथिक में एक ही सिस्टम 100 MB पे काम कर रहा था, करेक्ट? हेलो. यस सर. हाँ ना. So now what will happen? So here this system will work only on 10 MB of data. ये 10 MB पे करेगा. अब फाइनली काम होने के बाद वो एक एग्रीगेट करके फाइनली हमको आउटपुट देगा. सपोज ये अब हमारा क्या, पहले ये सिस्टम 1 घंटा टाइम लगा रहा था, अब ये क्या लगा रहा, कितना टाइम लगा रहा, 10 मिनट लगा रहा, ये भी 10 मिनट, ये भी 10 मिनट. तो फाइनली हमारा काम कितना जल्दी हो रहा है, 10 मिनट में पूरा काम कंप्लीट हो जा रहा है, करेक्ट? सो उसी लिए डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में हम देते हैं. एक कॉमन टास्क को कंप्लीट करने के लिए मल्टीपल सर्वर है. क्लियर? जैसे कि ये सिस्टम है, जैसे कि हमारा 100 MB का फाइल था, ठीक है, वो हमारा समझ लो 10 मिनट में कंप्लीट हो रहा था. अगर सेम और इसी तरह और क्लस्टर हम ऐड कर दिए डबल, तो हमारे इसमें क्या हो रहा है, स्पीड इनहेंस हो जा रहा है.
जो 10 मिनट टाइम लग रहा था वो अब मेरा 5 मिनट में ही कंप्लीट हो जाएगा। मीन्स 2x रिसोर्स इक्वल टू 2x स्पीड। ओके, यस नो, Yes, sir. कोई डाउट नहीं, राइट? नहीं sir. ओके, दैट्स व्हाई ऑल गुड बिग डेटा सिस्टम आर बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर, क्योंकि हमारे स्पीड मिले। व्हाट इज हाडूप? हाडूप इज जस्ट अ फ्रेमवर्क टू सॉल्व बिग डेटा प्रॉब्लम। यस नो? Yes, sir. तो हाडूप में हमारा क्या होता है? जब वन सेकेंड, सो हाडूप, हमारा हाडूप स्टार्ट कब हुआ था? सैटरडे को। सैटरडे को। Hmm. हाडूप हाडूप हमारा स्टार्ट कब, मार्केट में कब आया था, अच्छा रिलीज कब सॉरी, हुआ था? 2003, सॉरी। ये हाडूप हमारा, देखो हाडूप जो पहले थे, ये हाडूप को पहले कौन बनाया? तो हाडूप पहले गूगल ही यूज किया था। स्टार्टिंग में गूगल 2003 में ये एक व्हाइट पेपर रिलीज किया था। यू नो व्हाट इज व्हाइट पेपर? Notepad जैसा होता है सर? सॉरी, Notepad जैसा होता है? व्हाइट पेपर नहीं। व्हाइट पेपर क्या होता है, कोई भी कंपनी, आईटी कंपनी अगर कुछ न्यू टेक्नोलॉजी निकालती है, ठीक है, तो वो लोग जैसे अपना आइडिया को एक आर्टिकल बनाती है। वो अच्छा एक्चुअली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, जैसे आइडिया हम लोग लिखते हैं कि इस तरह हो सकता है, वी कैन डू अच्छा लाइक दिस। सर, ओके, ये पेटेंट जैसे होता है? उसी तरह। अच्छा, ठीक है। सो वो 2003 में जैसे वो आइडिया जैसे रिप्रेजेंट किए, बस एक्चुअल इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। मीन्स वो जैसे कि हाडूप बोला गया कि ये जैसे कि स्टोरेज, ये लोग पहला क्या काम कर रहे थे, स्टोरेज की। वो लोग बोले कि हम डेटा स्टोर एक सिस्टम की जगह मल्टीपल सिस्टम में थोड़ा थोड़ा रख सकते हैं, बट कैसे करना वो लोग कुछ मालूम नहीं, बस एक आइडिया दिया है। उसको बोलते हैं व्हाइट पेपर। 2003 में ये इस तरह का अपना आइडिया रखे थे कि इस तरह हो सकता है, अपना आइडिया को रिप्रेजेंट किए थे। क्लियर? और 2004 में जो डेटा हमारा स्टोर है उसको रिट्रीव करने का आइडिया दिया कि इस डेटा को हम मैप रिड्यूस द्वारा रिट्रीव भी कर सकते हैं, बट इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। यहां तक क्लियर? यस नो? यस सर। फिर 2006 में याहू आया तो बोला कि ये अपना पेपर सब हमको दे दो, आई विल इम्प्लीमेंट इट। तो वो गूगल से सब ले लिया दोनों पेपर, ओके सर। और बोला कि आई विल इम्प्लीमेंट, जो तुम लिखे उसको छोड़ो, वो हमको दे दो जितना है, बाकी उसको हम अपना में इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, नो डाउट? नो सर। यहाँ तक कुछ डाउट आप लोग बोलो, नहीं है सर। पक्का ना? यस सर। यस सर। ओके, अब देखो क्या हुआ। पहले मार्केट में वन सेकेंड, या देखो पहले क्या हुआ था हाडूप में, जब हाडूप डिस्कवर हुआ था एडीएफएस, तब मैप रिड्यूस था। ठीक है, जब इनिशियली जब हाडूप जो याहू अपना काम कर रहा था उस टाइम दो चीज था, एक एचडीएफएस था, एक मैप रिड्यूस था। तो पहले क्या था, नाम था पहले सॉरी गूगल इसका नाम क्या दिया था, जीएफएस दिया था, गूगल फाइल सिस्टम। बट याहू उसको चेंज करके दे दिया हाडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। अब मैप रिड्यूस का नाम वो सेम ही रखे, चेंज नहीं किया।
फिर हाडूप, ये हाडूप केम अंडर अपाचे सॉफ्टवेयर, मीन्स ये अपना जितना भी काम किया अपाचे को दे दिया, तुम लो अब बाकी ओपन सोर्स अपना काम करो 2009 में। पाचे कंपनी का नाम है। अपाचे कंपनी है, इसमें बहुत सारी सॉफ्टवेयर, बहुत सारा टेक्नोलॉजी इसी के अंदर अंदर, ठीक है। तो ये उसको दे दिया कि ओपन सोर्स में अपना, अब क्या हुआ 2003 में ये जीएफएस था, फिर मैप रेडिस याहू इम्प्लीमेंट किया, फिर याहू अपाचे को दे दिया, और फिर न्यू वर्जन अपाचे 2013 में रिलीज किया, जिसको बोलते हैं अपाचे हाडूप 2.0। ओके, क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. तो हाडूप वर्जन 1 में पहले क्या था, बस दो चीज था, एडीएफएस और मैप रेड्यूस। हाडूप वर्जन 2 में क्या हो गया, मैप रेड्यूस, एडीएफएस और एक कंपोनेंट ऐड हुआ जिसको बोलते हैं हम लोग यान। ओके, क्लियर? एक मिनट Sir, से नोट डाउन करना पड़ेगा। MapReduce is that command which runs in middle, na, which gets या processed. That's या what सो you were telling. yeah, ADFS is basically to store the data. MapReduce is how you will process the data. Means because of MapReduce in MySQL we have two components, right? So first one is DB and second one is SQL. In DB we used to store the data, and to process data we will use, what we will do, we will use a structure query language to process the data, right? Mhm. Similar Yes. way in Hadoop also we have two main components. First component is HDFS to store the data. Second component MapReduce, the data which is stored to retrieve that data. Okay. Yes, no. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Here also in MapReduce, so in second version they have introduced Yarn. So Yarn is nothing, just a resource manager. For example, I want to retrieve. I will not directly talk with MapReduce and all. First, I will give command to Yarn. So Yarn will manage the resource, that how much RAM, whether this particular data node is free or no. Means all the resource type of management they will do. So Yarn full form is yet another resource negotiator, mainly responsible for resource management. Okay, clear? Yes, no. So in Hadoop there are mainly three: ADFS, MapReduce, and Yarn. सर ये आप फाइल शेयर करोगे? ये हम शेयर कर देंगे। ठीक है। Sir, ये भी और वो HDFS command which you are showing, and so why didn't we receive Linux command yet, sir? वो Sorry, file है। tell me. Yeah, you shared a file for SQL, right? Similarly for Linux, that we learned it the first week. Yeah, I will share that one. Yeah, that one, the Hadoop and these three files. Please share it, sir, because there are many people who are going to internships and they're asking. They need for reference. Okay, I will share this one. Okay. Till now clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. See, in Hadoop ecosystem there are multiple components. Like just now we have seen one, right? Uzi, no, Scoop. Sorry. So in similar way there is Hive is there, HBase is there, Uzi is there, Peak is there. There are multiple components. Okay. And this is a Hadoop core. So ADFS, MapReduce, and Yarn is very important component for Hadoop. And apart from this, there are multiple components, means tool to work on this Hadoop. So for example, to import export, we have Scoop. To process the data and all, to do any transformation similar to SQL, we will use Hive. Okay, clear? Similar way, Uzi is to schedule the job. Okay. Yes, no. Yes, sir. What is Scoop? A command line interface application for transferring data between database to Hadoop. यहाँ तो ठीक है? एक मिनट से लिखने दो। इंटरफेस। सर इस वीक के बाद हमारा कोई टेस्ट होगा? टेस्ट का पता करना होगा, पूछना होगा।
I think होगा. Sir, सर कैसे will there be practical exam conducted like through online? Not sure. Just will check. अभी तुम लोग का रिजल्ट निकला, सब पास हो गया है? हो हाँ गया सर, सर सेमेस्टर का रिजल्ट निकला है, हाँ, पास है। हाँ सर सबके पास है. कोई ग्रुप में बोला था फेल हो गए, सभी क्लास अटेंड करने के बावजूद भी फेल हो गए. पता नहीं सर. Few people have got backlogs, others have passed. See, similar way there is a pig. Okay, pig is nothing to transfer. Miss, what is the use of pig? To just to data manipulate. For example, you are having unstructured data and all. It will clean your data and you can process. Similar way there is Hive. Hive is also similar to SQL. So, for example, let's say, no, sorry, not- so in Hadoop we have two main components. So first one, can you tell me? HDFS. Second one, MapReduce, right? What is the use of what is the use of HDFS? Can you tell? HDFS का Storage. storage, right? And Yeah. MapReduce Process. process. Okay. So what? So usually what happens? So पहले जब initially when Hadoop 1.0 version was introduced, so that time what happened? Only we were having only one version to process the data, which is known as MapReduce. So this MapReduce we used to write in Java program, Java language. But that time many people they told that I don't know Java, then how we can work on MapReduce? It's obvious question, right? If you don't know any language, then how you can work? So that time many people told I don't know Java, so how we can work? Because in Java, what will happen? You need to write 3 driver class. Then you need to compile. Then what you need to do? Then you need to create one jar file. Then after creating, you need to deploy this one to server. Then finally we run on command, Hadoop command. So for example, if you want to do one simple task also, in minimum 100 line of code you need to write. Okay. So that time people told I don't know Java and also we will not work. So that time Facebook has developed one language which is known as Hive. Okay. So that time Facebook developed one language which is known as Hive. So Hive is nothing, just SQL. Similar to SQL. So you people know SQL, right? Now? yes sir Yes. So Yes, sir. so that time also people were knowing SQL and all. They told okay now we can work as we know SQL, so it will be very easy. So people started using Hive. Till now Hive is used in market. So if you want to become any data engineering and all, so Hive is very important component. So you need to learn actually this one Hive. Okay, okay sir just no clear doubt. So Hive is So, nothing just yeah. Tell me so ये programming language and all, for which role is it important more? which one? All are for data engineering. Nowadays this MR is not used anymore because it. For example, if you are processing 1 TB of data, MR is taking 1 hour. But same data, if you are processing with the help of Hive, it will take only 30 minutes. So people started migrating from MapReduce to Hive. Clear? Yes, okay no. sir okay sir Because nowadays in industry people want to save time. So that's why now no one is using MapReduce. It become outdated. But internally this Hive is calling MapReduce only. Because we have only only one component to process data. So in Hive they have written in such a way that internally your query will be converted to MapReduce program. We will not do. There is one execution engine that will convert our query to MapReduce. Clear? Okay. Hmm. So instead of writing manually 100 line of code, so internally our Hive executor will convert our query to MapReduce. Yes, no, yes, doubt, any yes sir Yes, concern? sir. understood
ओके वन सेकेंड So tomorrow what will we do? हाइव Hive. सर उसके लिए अलग एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी? Yes, so any other application download and all, Sorry? please. सर एक बार ही इसको बता दो दो सर, तो क्योंकि क्या ये चीज सर नहीं तो क्या फिर एप्लीकेशन कोई और डाउनलोड करनी है क्यों हाइव के लिए? नहीं अपना सर्वर में तुम जस्ट हाइव क्लिक करके एंटर करोगे इट विल ओपन वन हाइव टर्मिनल in that particular ओके software each and everything is installed. So if you, ओके for example, currently you are working for, you have seen, right, MySQL. To open MySQL, what you used to do, MySQL enter, right? ओके Similar way, if you want to work on Hive, so just you will type Hive enter, ओके nothing else. सर हाइव भी बिग डेटा के अंदर ही आता है ना? हाँ जितना कंपोनेंट अभी तुम पढ़ रहे हो सब बिग डेटा के अंदर है. बिग डेटा है, ठीक है। So similar way जैसे कि पिग एक है, कोई जैसे सेल स्क्रिप्टिंग बैकग्राउंड का था या कोई दूसरा बैकग्राउंड जो स्क्रिप्ट लिखते थे तो वो लोग पिग यूज करते हैं. ओके ठीक है। अभी मार्केट में न्यू टेक्नोलॉजी आया एक बोलते स्पार्क. मेनी पीपल यूजिंग स्पार्क बिकॉज ये जितना भी चीज हम लोग ये मैप प्रोड्यूस हाइव है वो क्या डिस्क पे कंप्यूट करता है जितना भी कैलकुलेशन. बट स्पार्क हमारा क्या करता है वो मेमोरी में करता है. अच्छा सर, मेमोरी. तो मेमोरी में कुछ भी रहता है फास्ट. जैसे फॉर एग्जांपल टेक एग्जांपल ऑफ मोबाइल. सो नाउ डेज पीपल आर सेइंग दैट आई नीड 8 GB रैम 10 GB रैम. व्हाई? क्योंकि उसको प्रोसेसिंग स्पीड चाहिए. जितना रैम रहेगा उतना जल्द स्पीड रहेगा मोबाइल में. सो दैट्स व्हाई वॉट एवर डेटा वी आर प्रोसेसिंग फर्स्ट विल सेंड दैट डेटा टू मींस ऑल द each and every calculation will be done in memory. So in market now Spark is used and it's very fast as compared. So for Hive में कितना टाइम लग रहा था हाफ एन आवर राइट. बट इन स्पार्क इट विल टेक ओनली 10 to 15 minutes. So now people started migrating from Hive to Spark, but they are using both because same Hive code will be used in Spark. अच्छा Just the way और of सर writing little स्पार्क different. किस कंपनी का? Spark सब बिग डेटा ये भी सब अपाचे अच्छा सब अपाचे के अंदर ही है. ठीक है. बिग डेटा का प्रोसेस करने के दो मेन कंपोनेंट है, हाडूप है स्पार्क है. हाडूप से भी करते हैं हम लोग इस प्रोसेस एंड स्पार्क से भी करते हैं. इन हाडूप इफ यू वांट टू प्रोसेस वी विल यूज हाइव. ओके क्लियर? ओके सर, यस सर। कोई डाउट यहाँ तक कुछ? और डेटा जैसे कि माइसिकल में डेटा उसको माइग्रेट करते हैं एचडीएफएस में, सो विल यूज स्कूप. सब इंटरलिंक है. ओके वन एक दूसरे से कनेक्टेड है. जैसे कोई स्क्रीन शेयर करो अपना जो सर्वर ऑन है जिसका. हाँ इसको एग्जिट करो. So to work on this one Spark and all, so what we'll do, you just will type Hive, HIVE, type Hive here. होम में जाओ। नहीं यहीं पे डायरेक्ट Hive करो, क्लिक करो, हाइव लिखो Hive HIVE, एंटर. टाइम लेता है. अब यहाँ लिखो शो डेटाबेस. सो हम लोग डेटाबेस देखने के लिए MySQL में क्या करते हैं, शो डेटाबेसेस राइट. बेसिस. सेमीकोलन एंटर. इसमें भी सेमी कॉलम चलेगा? जैसे MySQL में सेम चीज इधर भी है. ओके. तो अभी एक भी डेटाबेस नहीं है. अब अपना अब कोई अपना क्रिएट डेटाबेस करो. Create database.
जस्ट थोड़ा सा सिंटेक्स चेंज है, दैट विल लर्न टुमारो। देखो यहाँ पे क्लियर, देखो यहाँ पे आप करो शो डेटाबेसेस, देखो तुम्हारा डेटाबेस शो करेगा। अच्छा, टेबल बनाने के लिए भी सेम सिंटेक्स ही यूज होगी क्या? हाँ सेम ही है, बस उसमें और कुछ हम लोग और कुछ एक्स्ट्रा चीज ऐड करते हैं, वो कल देखेंगे हम लोग। ओके। क्लियर, कोई डाउट, Yes, कोई sir. कंसर्न? अच्छा, इसमें टेबल मतलब सीक्वल में सो डेटाबेस करते थे तो टेबल में बन के आता था। टेबल में हेलो, हाँ। वो तो डिजाइन है, अच्छा, वो तुम अलग अलग कंपनी का अलग अलग सर्वर यूज करोगे, सबका अलग अलग डिजाइन है। और मेनली उसमें तुम्हारा बहुत काम सारा होना चाहिए, फाइल प्री लोडेड था, इसमें सिर्फ डिफॉल्ट रहता है। इसमें कुछ नहीं है। अच्छा, सर मेरा एरर दिखा रहा है शो डेटाबेसेस के लिए। स्पेलिंग पहले देखो। तुम पहले हाइव में तुम गई नहीं होगी। हाँ हाइव में गई हो? हाइव लिखी हो? हाँ स्क्रीन सर। शेयर करो, स्क्रीन शेयर करो। सर एक बात पूछनी थी, जो अपना उबंटू है, हाँ, उबंटू के लिए भी हमारे को पुट्टी डाउनलोड करना पड़ेगा? उबंटू के लिए, अगर उबंटू हम लोग कहाँ यूज किया? सर मेरे पास अब मैक है, मैक में उबंटू डाउनलोड किया है, तो उबंटू में मैक में, VMware के साथ। ओके। ठीक है, उस पे अपना हडूप डाउनलोड कर लिया और साथ में अब अरे वो मैंने पुट्टी भी। तो मैं कर वो हो जाएगा वो। कल मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें कर लिया था। तो आनंद आनंद हेल्प कर देंगे आपको। हम्म। हाइव अब करो शो डेटाबेस। क्रिएट डेटाबेस, पहले डेटाबेस बनाओ तो सही पहले। डाटाबेसेस क्यों लिख रहे? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी। गो अप लिटिल बिट, एक बार अपना सर्वर रिस्टार्ट करना, ठीक है? इनएक्टिव है क्या? सर एरर। हाँ जाओ, रीस्टार्ट करो तो एक बार। एक बार अपना सर्वर कर, एक बार क्लास खत्म होने के बाद पूरा सर्वर सिस्टम रिस्टार्ट करना, देन पावर ऑन करना, फिर इट विल वर्क। ओके, Okay, sir, I'll try. Only three commands you thought, right? We should go to Hive, show database, and create database. no need to create anything for now, Okay. just open and just do show database and create database, nothing else. Then tomorrow we will see in depth. ओके सर। Okay. चलो कल कनेक्ट करते हैं। ठीक है सर, ठीक है। बाय।